Hello everyone, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So it's been a long time since I have done a haul, right? I think last year Christmas के time पे किया था. So since then I was waiting for a big sale to come in so that I can get plenty of items, and so I have purchased so many things from Purple I Heart Beauty sale or Purple I Love Beauty sale, however you pronounce it. So I'll be unboxing all these items in front of you, and along with that there's a announcement that I wanted to make. जी हाँ, giveaway वाले announcement. So if you want to win a giveaway worth ₹4,000 then please keep on watching. So इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. इनकी एक्चुअल MRP एंड सेल प्राइस मैं नीचे कहीं पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. इन दिस बॉक्स आई गॉट सम सीरम्स एंड एक्सफोलिएटर्स. सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं केमिकल पीलिंग या केमिकल एक्सफोलिएटर्स क्यों नहीं यूज़ करती हूँ. दैट इज़ बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक. जिनको मेजर स्किन कंसर्न है उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो केमिकल पीलिंग या केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करें. जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Mostly serums में I use vitamin C serum, and that's why I picked up something very cute, and it's from Aap's Goodness and it's their vitamin C face serum. It comes with this 5 ml of bottle और ये काफ़ी छोटी, like सबसे छोटी bottle है. It doesn't even have that dropper. So it comes like this, and why I choose this product is because ये बहुत कम quantity में है, and you know you should always buy something smaller क्योंकि आपको पता नहीं आपकी स्किन को ये सूट करेगा कि नहीं. So I would love to try this one out. The second one I got is very famous among all the bloggers, and it's none other than Good Vibes Rose Radiant Glow Face Serum. ये almost सभी के पास है. It comes with this dropper and it comes in this small cute bottle. मैंने आज तक Good Vibes के बहुत सारे products try किए हैं और वो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट भी कर जाता है. So I was like, okay, let me get this serum also and let's see how it works on my skin. Now something different and I have never used before or wished to use before. There are two serums from NY Bay, and the first one is NY Bay Skinfident Fresh as Broadway Art Skin Purifying Face Serum. कितना बड़ा नाम है. So this is with salicylic acid and tea tree, and the second one is Shining as a Sitcom Star Face Serum with salicylic acid. So ये दोनों serums है. ये ऑयली स्किन के लिए है और अभी जैसे समर में मेरी ऑयली स्किन ऐसे पीक पर होती है. So I was like, okay, let me get the small bottles. ये एक्चुअल में 30 ml के bottles में भी आता है. So I was like, okay, let me try the smaller bottles and then I can give you my review about it. But again, I'm telling you guys, I am not fond of chemical based product. I just got this because इसके ऊपर लिखा हुआ है that it deeply cleanses pore and mainly it is for blackheads. और blackheads तो मतलब टीनेज से प्रॉब्लम है ही. तो आई लाइक ओके, उसी बहाने यू नो मैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स और केमिकल सीरम जो भी है मैं यूज़ कर पाऊँ. नेक्स्ट अप आई हैव दीज 2 lip scrubs from the brand Calista, and the first one is their Plump Up lip scrub in the flavor Rose, and the other one is Tan Removal lip scrub in the flavor Coffee. I have used them एक बार, so I really like them. I really like the Rose one. This is very mild. ये थोड़ा सा harsh लगा मुझे, like little bit, but it's really good for tanning. Again I have got something from Good Vibes and it's their activated charcoal soaps. तो ये सोप मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किए हैं इन ऑल द वेरिएंट्स. लाइक येस, मैंने सारे वेरिएंट्स के यूज़ करके देखे हैं और मुझे चारकोल सबसे अच्छा लगा. एंड दे हैव रिड्यूस्ड द पैकेजिंग ऑल्सो. इसमें आई थिंक 3 या 4 सोप्स है. सो आई गॉट दिस वन इन वेरी गुड प्राइस. और जो मैंने पहले सीरम लिया था और ये सोप पे मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला है, एंड दैट इज़ गुड वाइब्स ग्रेप फ्रूट नरिशिंग फेस क्रीम. ये एक 50 ग्राम के टब में आता है और इसका MRP है $225 जो कि मुझे फ्री में मिला है. ऑलराइट, सो आई हैव फ्यू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आप्स गुडनेस और ये उनकी रोज़ रेंज में से है. अगर आपने मेरा इंडिपेंडेंस हॉल देखा है इसके पहले तो उसमें मैंने एक रोज़ फेस वॉश लिया था जो मैंने ख़त्म कर दिया है, एंड आई लव्ड इट सो मच कि मुझे लगा इनके और भी इस रेंज के प्रोडक्ट मुझे ट्राई करने चाहिए. एंड सो आई गॉट दिस क्यूट लिटिल मिनी ट्यूब्स. ये है उनका रोज़ फेस मास्क एंड दिस इज़ द रोज़ फेस स्क्रब. सो ये आई थिंक 30 ग्राम के पैकेजिंग में आता है और ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिले हैं. सो आई वुड लव टू ट्राई दिस आउट. और मैंने और एक छोटा सा टोनर, नो दिस इज एक्चुअली अ रोज़ वाटर. तो मैंने रोज़ वाटर लिया है बट आप इसे एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली या सो आई गॉट
something again new which I never used before. So this is Aap's Goodness Strawberry Nourishing Manicure Pedicure Kit. I am not a manicure pedicure person, but जब से मैं nail art करना चालू किया मैंने, तब से I need to take care of my nails, and so I was like okay let me try this one, क्योंकि अभी पार्लर में तो हम जा नहीं सकते, सब जगह लॉकडाउन है यहाँ पे. So this is the Nourishing Manicure and Pedicure Kit. तो ये एक्चुअली 5-step रूटीन में आता है. इनने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये कैसे यूज़ करना है. So in this small pack you will get 5 sachets, which is a soap, cuticle cream, scrub, massage cream and mud mask. तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए then let me know in comment section below and I will give you a review with demo. और इन सारे प्रोडक्ट्स पे मुझे मिला है ये उनका बहुत बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है. दिस इज सैंडलवुड पाउडर फ्रॉम आप्स गुडनेस. मेरे पास इसका बड़ा वाला पैक है जो मैं मेरे हेयर के लिए और फेस के लिए यूज़ करती थी. तो आई गॉट दिस एज अ फ्रीबी. So there are a lot of freebies. Okay, so ये box तो हो गया, मैं इसे साइड में रख देती हूँ. And before we move it to another box, I would like to tell you something about giveaway. So me and 3 of my friends, Shweta, Pradipta and Ashima, we have collaborated for this giveaway. And as you all know, this is going to be a 4K giveaway. So इस giveaway में participate करने के कुछ simple rules है जो आपको follow करने पड़ेंगे. All you have to do is subscribe to our channel and follow us on Instagram. ये है हमारे Instagram handle और ये है YouTube channel. इन सारे handles और channel के link मैं description box में डाल दूँगी. So it will be easy for you to reach out and follow us. And apart from that, you also need to watch this video till the end and let me know which is your favorite product from this haul और आप किस product का review देखना मेरे channel पे पसंद करेंगे. Third thing, comment with only smileys or emojis won't be considered. So please be mindful while commenting on our videos. And most importantly, the fourth thing, that we will be considering only real accounts for this giveaway. कुछ accounts होते हैं जो सिर्फ giveaway के लिए create किए होते हैं. We won't consider such accounts. Again, I'm telling you guys. So people who will share this giveaway on the Insta story and tag us will get some brownie points. So we will be choosing 4 winners who will get 1000 rupees of gift voucher each, and it is of your own choice. Yes, you heard me right. जो भी 4 विनर्स होंगे उनको अपने पसंद के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे. We will be announcing 4 winners on 1st of June. So you have good 1 month का time. So invite your friends, tag them in our post, ask them to participate in the giveaway and subscribe to our channels and spread this as much as you can. Okay, so let's move ahead with our second box, and I have got some products from the Moms Co because ये sensitive skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं and almost सारे chemical free होते हैं. So the first thing I got is the Natural Protein Hair Serum. ये मैंने आज सुबह ही यूज़ किया है and I really like it. So this is actually like a very good for frizzy hair और ये बालों को भी untangle कर देता है. The another product that I got from Moms Co is the Natural Vita Rich Under Eye Cream. ये मैंने पहले कभी try नहीं किया but I have heard lot of good reviews about this product. और मुझे आजकल बहुत डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई दिस वन. सो इट कम्स इन दिस क्यूट ट्यूब एंड आई थिंक या दिस इज़ अ रोल ऑन. मैंने अभी तक से यूज़ नहीं किया है बट आई स्टार्ट यूजिंग इट राइट फ्रॉम टुडे एंड आई विल अपडेट यू विथ रिव्यू मे बी आफ्टर अ मंथ और सो. ओके, सो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे आई थिंक 35% ऑफ में मिले हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव रिसीव दिस फ्रीबी with these 2 products. So इसके अंदर I think sample products है. Let me show you what I got. Yup, so this is the Natural Vita Rich face cream in the sample pack and this is a Moms Co body butter. इसके भी मैंने अच्छे रिव्यूज सुने हैं but this is specially for new moms. So I really like this. This has a very mild fragrance and ये actually stretch marks के लिए बहुत effective है. And face cream तो कोई भी यूज़ कर सकता है. So I will also try these cuties. Alright, after that I have something from Aroma Magic and this is the Aroma Magic Lavender Face Wash. I have used 2 or 3 face washes in past. I think one with chamomile, one with tea tree and grapefruit और वो तीनों मुझे बहुत अच्छे लगे. So I was like okay let me get this one. ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक में रहता था और इस बार ये मुझे मिल गया. बट दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन पीपल बट ये हाइड्रेटिंग और सॉफ्टनिंग है तो मुझे लगा ठीक है यूज़ तो मैं कर ही सकती हूँ. So again I got this one in buy 2 get 30% off or 25% off. I don't know, I'll mention the price नीचे. And this is how it looks. Very amazing packaging. I love this packaging.
So apart from face wash, I got their Aroma Magic Under Eye Gel. इसके पहले जो हमने मॉम्सको का लिया था, दैट इज़ अंडर आई क्रीम, दिस इज़ अंडर आई जेल. वो पफिनेस पे ज़्यादा काम करता है और ये लाइटनिंग पे ज़्यादा काम करता है, लाइटनिंग और रिफ्रेशमेंट के लिए. तो जेल और क्रीम ऑब्वियसली अलग काम करते हैं. सो आई गॉट दिस वन ऑल्सो. सो इट कम्स इन दिस ट्यूब एंड आई गेस ये तो नॉर्मल, या इट कम्स इन दिस ट्यूब पैकेजिंग. आई हैवंट यूज्ड इट येट. मैं देखूँगी, पहले मैं मॉम्सको को यूज़ करूँगी एंड देन नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई एंड यूजिंग दिस वन. सो तब मुझे डिफरेंस पता चलेगा एक्चुअली क्या है. ओके, सो नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर समर्स एंड आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा. So I got these two sunscreen. The one is from Lotus Herbal and one is from Biotic. Biotic is new for me क्योंकि मैंने आज तक इनके सनस्क्रीन कभी ट्राई नहीं किए थे. And this is their Sunshield Bio Sunflower Matte Gel with SPF 50. So this is a matte gel and this is the Lotus Herbal Safe Sun Matte Look Daily Sunblock with SPF 40. दिस इज़ न्यू फॉर मी बिकॉज मैंने इनका पहला जो वेरिएंट है SPF 50 वो ट्राई किया है एंड आई थिंक आई फिनिश देयर 2-3 ट्यूब्स एंड दिस इज़ न्यू फॉर मी बिकॉज दिस इज़ टिंटेड एंड यू नो आई प्रेफर मोर टिंटेड मॉइस्चराइजर दीज डेज एंड टिंटेड सनस्क्रीन है तो अच्छा ही होगा. आपको वो वाइट कास्ट आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा, जो आपका स्किन कलर है वैसे ही दिखेगा. सो आई थिंक आई विल यूज़ बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली. ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस बिग बॉक्स और इसके अंदर मेकअप और स्किन केयर दोनों प्रोडक्ट्स हैं. So let's start with M Caffeine first. So I have got there one of the recent launch. This is the Espresso Coffee Bathing Bar. और ये ऐसे पैकेजिंग में आता है. This is how the soap looks like and this is like my first ever coffee bathing bar. So I'm very excited to try this out. And apart from that, I have got this Choco Body Lotion. इनके सारे मोस्टली प्रोडक्ट कॉफ़ी के होते हैं बट दे हैव कम अप विद द चोको रेंज एज वेल एंड आई गॉट दिस वन बिकॉज आई एम लाइक अडिक्टेड टू कॉफ़ी एंड चॉकलेट फ्रेगरेंसेज दीज डेज. तो लेट्स सी इसका फ्रेगरेंस कैसा है. तो इट कम्स इन दिस बॉटल. सो द पैकेजिंग इज लिटिल डिफरेंट. जो कॉफ़ी वाला है उसको आई थिंक ब्लैक कलर का पैकेजिंग होता है एंड दिस इज मोर लाइक अ ब्राउन. ओके, so it is like a, it doesn't have chocolate aroma, इसको भी कॉफ़ी का ही स्मेल आ रहा है but I think it's very hydrating and it's almost like my skin color only. So wow, nice, different. Then I got the coffee body scrub. Yes, so this is a bigger jar. So इसका मैंने वो छोटा सैम्पल पैक ट्राई किया था जो फ्रीबीज में आता है यूजुअली and I loved it actually. So I thought okay, let me get the bigger one and I think I got them on very good discount. M Caffeine पे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% का डिस्काउंट होता है but I got these product on 25% off and ये तो मतलब बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया ही होगा. No wonder, this is a wonderful product. So it comes in this jar and they have this cute wooden spoon with it. Okay, so apart from 20-25% off, I also got a hand cream free with all of these products and this is again their coffee hand cream. This will retail you for 325 rupees but ये completely free में आया है which is a good thing. I am more into hand cream. Again, I told you I do nail art, so I take care of my nails and मैं बहुत सारे hand cream use कर रही हूँ. So I'm very happy that I got this one. Next up, we have 3 products from Wow Skin Science and the first one is the Upton Face and Body Pack. So I have used the Upton Face Wash and I totally loved it. उसके बेसिस पे ही मैंने ये फेस पैक खरीदा है just to see and I got this on a very good discount. I think 45-50% off. So I have opened it actually just to see how the fragrance. It is very mild and this is how the texture looks like. So I'll definitely try this one in one of my skincare routine and I'll update you with the review as well. So it comes with this brush again. It's a silicone brush, so it's very easy to apply. Apart from that, I got something for my hair mask. So this is their Red Onion Black Seed Oil Hair Mask. मैंने इनका शैम्पू पहले ट्राई किया है. पहले इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा था बट बाद में मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज मेरे हेयर बहुत फ्रिजी होने लगे. बट आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यू अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. सो लेट मी ट्राई दिस वन.
and this smells good actually. Onion का smell तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, so I will definitely try this one as well. So the third and last product we have from Wow Skin Science is their Wow Stimulating Scalp Massager Brush. So this is obviously for head massage. और मुझे आजकल चमकी करने में बड़ा कंटाल आता है, so I thought maybe this is helpful for me. So it has silicone bristles here and it's I think good for scalp massage, and I think I'll be trying this one out soon, like very soon. Alright, so we are done with skincare now and it's time to unbox some makeup as well. So the first thing that I got are these 4 lipsticks from Blue Heaven and it's their non-transfer lipstick. I never tried these before but ये मुझे 40% off में मिला था, so I thought to get them. And the shades I got are Smoked Velvet, Velvet Maroon, Truffle Brown and Caramel Cult. So I think इसमें से 2 nude है, एक purple है एंड एक रेड है आई थिंक. सो इनके स्वॉचेस मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. ओके, आफ्टर दैट आई गॉट दीज मिनी स्पॉन्जेस फ्रॉम द ब्रांड AY. सो दीज आई गॉट स्पेशली फॉर कंसीलर्स. तो इससे कंसीलर अप्लाई करने में बहुत हेल्प होगा, स्पेशली ऑन योर आई एंड नोज एरिया. So yeah, and I got these on very cheap price, I think around 200 or something, and I got 6 mini sponges in that. Then we have something from NY Bay and I got them on buy one get one offer, and these are their NY Bay nail polish remover. तो ये पहले बहुत छोटी बॉटल में आते थे लेकिन अभी इन्होंने इनकी पैकेजिंग चेंज करी है एंड बाय वन गेट वन की प्राइस में तो ये बेस्ट ऑफर में मिल सकता है आपको. Apart from that, I got 2 lipsticks from NY Bay and it's from the Runway collection. No, it's from their matte lipstick with argan oil. Yeah, it's from Runway collection actually. Okay, so this is how the outer packaging looks like. This has a golden cap and the shades that I got is Stage Wear and the Statement. So the first shade is I think a brown nude shade or pink nude shade. Let me quickly swatch it here. Wow, very beautiful shade. So this is the shade Stage Wear and the other one is Statement. So this is like a maroon color I guess. Yeah, berry maroon shade. ओके, तो लिपस्टिक स्वॉचेस की बात ही चल रही है तो मेरे पास और एक लिपस्टिक है एंड इट्स फ्रॉम स्टेक वर्की बैडएस लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल कलर बट ये मैंने जानबूझ के लिया है बिकॉज आई थॉट ओके आई कैन डू समथिंग विद इट एंड इट्स अ ब्लू ग्रीनिश ब्लू कलर, नॉट अ नेवी ब्लू, and it has some chemical kind of a smell. I don't know how it's on lips but I will definitely try this one out. Okay, so lipstick हो गया, अभी कुछ eyeliners देख लेते हैं and the first one I got is from Maybelline and this is like my repurchase. ये आपको almost सारे hauls में दिखेगा मेरे. And then I got 2 eyeliners from Stake Worky and it's from the range Look Too Glam to Give a Damn. So these are, but basically these are not black liners. Black liner में वो एक ही था. Now rest of them they are colored liners. So the one is in the shade brown and this is the green shade. Green shade का नाम है Green Fire and the brown one is Smoke Like Rockstar. Let me swatch it. Okay, so it comes with this different kind of applicator. So this is like a mud brown color. This is not a dark brown color but look at this. It's like a chocolate brown color I feel. Yeah. Let me swatch this one here. They are very pigmented by the way. This is just one swap application. Very beautiful color, right? I love green eyeliners. And the best thing is ये जो है ना ये move हो रहा है तो किसी किसी को ऊपर eyeliner लगाने में दिक्कत होती है तो this is good for you. This is actually good for beginners. Okay, after that I have another 2 eyeliners and I got them again on buy one get one offer. So this is from the brand Bella Voss और इस brand में हमेशा कुछ ना कुछ buy one get one में तो मिलता ही रहता है. So the first shade that I got is Soft Snow. ये मैंने पास्ट में आई थिंक एक ही बार यूज़ किया था और ये फिर बाद में मैंने यूज़ नहीं किया, वो सूख गया. So I got this is actually my repurchase and this is very beautiful white eyeliner. इसके जैसा white eyeliner मैंने और कहीं नहीं देखा.
Look at this, how precise this tip. And this is like a proper white, you know, इसमें बिल्कुल भी silver particles नहीं है, कुछ भी नहीं है. This one. And apart from that, I got this silk in silver. So this is a silver eyeliner. मेरे पास already golden था, silver eyeliner था नहीं मेरे पास, और ये buy one get one में मिल रहा था, so I thought okay I'll take silver only. So this is okay. This is not very pigmented. You have to apply it again and again. So this is the silver eyeliner and this is the white one. Next up we have something from Colorbar and it's their Scandal Kajal. So it comes like this. I have one more shade in this. I think वो dark blue या navy blue color का है, and this shade is more like a sea green color, and I got this in 40% off. So I was like, okay, let me get this one this time. So it is like this. It's matte and you know, very beautiful color. It's very hard to find kajal in this color, so definitely gonna use it. And apart from that, it is retractable also, so you don't have to sharpen it. Okay, so the next thing I got from Colorbar is their Smart Blend Silicone Sponge. So we use beauty blenders, but I never use this silicone sponge, and I have heard that it is very convenient while traveling, क्योंकि sponge को साफ करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है. And it looks something like this. So this is made up of silicone, और ये आप you know ऐसे dabbing के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये normal water से भी साफ हो जाता है, and it's very convenient. कितना सा तो है यार ये. So I got this one also on 20% off. Okay, so the last product from this box is again my repurchase, and it's from Purple Be Your Own BFF Compact with SPF. This is my everyday compact. मैं अभी कुछ दिनों से बिल्कुल भी कोई दूसरा compact यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ Purple का compact यूज़ करती हूँ because I don't know, this one just suits me. इससे मुझे कम sweating होती है, और like ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. I don't know, I'm just using it. So this is how the shade number 1 looks like. It's Ivory Self Care, and if you're of my complexion तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा. And lastly, I got this box which contains all makeup products from one brand, and it's from Swiss Beauty. So I've recently tried their HD matte lipsticks and I fell in love with them. So I thought, okay, let me get their other cosmetic products as well. So I got some face makeup, which I can show you where to keep it. Okay. So I got their liquid concealer in the shade Sand Sable, I guess. Yeah, this is shade number 2. Yet to try because everything is packed actually. मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है. So this is the concealer. Then I got so many things. Then I got their eyeshadow, liquid eyeshadow actually. This is very beautiful shade. Where's the shade name? I think it's number 2. Yeah, this is number 2 Diamond Dust, and this is a very beautiful silver eyeshadow. I'll swatch it for you. Somewhere here. This one. It's actually not very pigmented, but yeah, you can build it up. This eyeshadow. Diamond Dust, I guess, yeah. Then I have this pure matte lipstick from Swiss Beauty, and this is one of their best-selling products, and this is in the shade Hot Nude. So this is how the bullet looks like. This is the cheapest lipstick they have, I guess, and this is how the bullet looks like. So this is the shade Hot Nude. Then I got these 3 eye pencils from the same brand. So these can be used as the eyeliner and kajal. So the first one is turquoise, the electric blue and green. If you want me to swatch them for you, I'll do that. This is how the pencil looks like. It's not retractable, you have to sharpen it. So this is the shade green. I love this one. This is in the shade turquoise. This is little bit of shiny, the green turquoise, and let me swatch electric blue for you. And this is the shade electric blue. Wow, look at that shade. I love all 3 of them actually. Very beautiful. We can just create one eye look with these 3 pencils. Then I got the 2-in-1 eyebrow and gel eyeliner.
So I haven't opened it yet, but this is something like a small tub where you have eyeliner and eyebrow powder as well. So it comes like this. Okay, so the upper portion, I think this is the eyebrow powder. So they have this mirror also over here, and at the bottom they have this gel eyeliner. So very nice 2-in-1 product actually, and look at this, so travel friendly. Okay, so after that I got the Swiss Beauty Ultra Fine Loose Finishing Powder. I thought I'll try the compact, but मुझे लगा नहीं, loose powder ज़्यादा use हो जाता है, so that's why I got this one. So it comes like this, looks very luxurious, and I have picked up the shade 2 Banana. They have few more shades in this. So it comes with this cute sponge, and of course it comes with the mirror also. And then I got this high coverage foundation, and I have picked up the shade Natural Beige. This is 03. I thought I will pick 1 or 2, but अभी वैसे गर्मी है और tanning तो होती है, so I thought this one will be the best suitable for me. And apart from that, I got the Swiss Beauty Precision Mascara. So this is how it looks. They have couple of other mascaras as well, but I thought this could be the best one for me. I actually like the wand it has. Then the most essential product that we have, that is the makeup fixer. ये मैंने अभी तक खोला नहीं है because I already have so many makeup fixers. और जब वो खत्म हो जाएगी तभी मैं इसे खोलूँगी, मैं इसको इतने जल्दी खोलने वाली हूँ नहीं. Then after that I got something big one, and this is their blush palette, which I can use for contouring, blush and highlighter also. I actually have the highlighter which I purchased in my previous Nykaa sale. So this is the Ultra Blush Palette, and the colors I have received are, oh my god, so good, so good. And this is such a versatile palette, and this is how the palette looks like. It doesn't have mirror, but that's okay. And there are so many shades actually. This one is for highlighting. These 6 shades you can use for blush, and this one specially you can use it for contour. So this is like all-in-one palette, and it will cost you for just with $4.99, और ये मुझे 40% ऑफ में मिला है. मतलब सोचो. So again, this is their one of the non-transfer waterproof lipstick, and I got in the shade Bare, and this is again a nude color. This is how the lipstick looks like. Wow, it's a peachy nude color. Alright, after that I have picked up these 2 eyelashes from Swiss Beauty, and both are in the variant Noir because उनके बाकी eyelashes out of stock हो गए थे जब मैंने ये buy किए. But definitely I'll check them, और अगर इसमें और मिले तो भी मैं लूँगी because these are the cheapest lashes that you can get. It costs you around some 89 or 90 rupees. Alright, and the last product that we have from Swiss Beauty is their Ultimate Shadow Palette, and it consists of 9 colors. They have some 8 to 9 variants in this. I don't know ये कौन सा है. Okay, this is the variant 8. इसमें और भी बहुत सारी nude colors है, you know, party colors है. Some dark colors are also there, so definitely check this out. That's all for today's video, and I hope you enjoyed watching this haul. Don't forget to participate in the giveaway. All the rules are mentioned in my description box below, so make sure you go there and check it out. Also, like this video and subscribe to my channel. I'll take a leave now, and I shall see you soon in my next video. Till then, bye bye and take care.